ये मेरी दूसरी वीडियो है विद रेफरेंस टू द लोन एंड ओवरड्राफ्ट्स। जो हमारा टॉपिक था, इसके ऊपर जो हमारा चैप्टर 19 है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का, इसके साथ इसमें ये हमारी दूसरी रिकॉर्डिंग है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने एक वीडियो को दो हिस्सों में तोड़ दिया। पिछली वीडियो में जब मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था कि आपका भी इंटरेस्ट है ताकि आप टॉपिक को देख सके। शुरू जहां से हमने शुरू किया था, चैप्टर 19 जो है, इसमें हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तक कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। यानी हम लैंडिंग टू एंड द बोरिंग बाय द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रेजिडेंट फॉरेन nationals in the PKR and the loans and advances by the authorized dealers in FCY। ये हमारा पार्ट ए था। पार्ट बी हमारा प्राइवेट लैंडिंग फ्रॉम अब्रॉड जो है हमारा PSBA, इसका एब्रिविएशन था और ये हमने इसको कवर किया। पार्ट सी फॉरेन करेंसी ट्रेड फाइनेंस फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा FTFA, इसका एब्रिविएशन के साथ ही चल रहा है चैप्टर पार्ट हमारा, इसको भी हमने कवर कर लिया था। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट डी, इट इज द फाइनेंशियल सेक्टर बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, FSBA। ये FSBA हमारा पार्ट डी है, जहां से मैं आपके साथ अपना डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर जो है, जैसे हमने कहा था कि वहाँ पे इंडिविजुअल जो है या बिजनेसेस जो है वो बोरो करेंगे, कंपनीज बोरो करेंगी, तो और इसी तरह फाइनेंशियल सेक्टर भी बाहर से बोरिंग करते हैं। तो उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलेशन में एक पार्ट रखा है, दिस इज द पार्ट डी वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। द टर्म FASB refers to the foreign currency borrowing from the abroad by the eligible borrowers। अब देखिए, इसमें देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है रेगुलेशंस का, एलिजिबल बोरोअर्स है, लेंडर है, और हमारा जो उसकी बोरिंग कॉस्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर आगे हम और मजीद कोई कंप्लायंसेस है तो उनको डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान FS, ये आर ओनली अलाउड इन द कन्वर्टेबल करेंसीज। ठीक है, कन्वर्टेबल करेंसीज के लिए ये अभी आगे डिस्कशन हम कर लेंगे इस पे। Now we are seeing eligible borrowers, FSBAs, can be raised from the eligible lender। देखिए, eligible lenders आ गए हमारे साथ, lenders by the banks, financial institutions, development financial institutions, housing finance companies, non-banking financial companies, microfinance banks, institutions, and the payment systems operators। payment system operator देखिए, पेपाल है, पेपाक है, या हमारे पास वीजा कार्ड के सिस्टम्स है। इनके अंदर जहाँ पेमेंट्स करनी होगी, इनके थ्रू हम जाएंगे तो हमारे पास फिर इसके ऊपर ये रेगुलेशन अप्लाई हो जाएंगे। पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स एंड द ब्रांचेस सब्सिडीज ऑफ द फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। तो ये तमाम चीजें जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो पेपाक है, पेपाल है, या फिर हम कह रहे हैं कि ब्रांचेस और सब्सिडीज ऑफ द फॉरेन बैंक्स, जो भी हम फॉरेन बैंक सब्सिडीज के ब्रांचेस हैं, उनके भी जो पेमेंट के सिलसिले तरीके हैं, उसके लिए भी हम इसके अंदर आएंगे। While the request for the authorized dealers bank working in the public sector for the raising FSBA will be dealt with the Exchange Policy Department of the State Bank of Pakistan। इसके लिए एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डील करेगा, एंड इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान will deal with the request received from all the public sector enterprises, PSEs, operating in the financial sector of Pakistan। पब्लिक सेक्टर enterprises है, उसके सेक्टर की बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। की हम बात करें तो वो अगर मौजूद है तो उसके लिए भी हम स्टेट बैंक के थ्रू ही मूव करेंगे। एलिजिबल लैंडर्स हु कैन गिव द फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस regulations। FSBA can be raised from the international financial institutions, donor agencies, specialized bank institutions, and the overseas branches correspondents of the authorized dealers। तो ये हमारे पास आ गए डोनर्स एजेंसीज आ गई, तो वर्ल्ड बैंक हो गया, या कोई और डोनर एजेंसीज है जो बाहर से जो डोनेशन है, तो बहुत से डोनेशन हमारे पास आते हैं विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक पर्पसेस के फ्लड है उसके लिए आ रहा है डोनेशन, या मुख्तलिफ चीजों के जो इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू डोनेशन आ रहे हैं उनकी हम बात करें। The eligible borrowers will shall obtain the funding from the reputable international lending institutions। देखिए, reputable का जब वर्ड आ रहा है तो हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, इसके अंदर what we need to see anti-money laundering, CFT, combating financing of the of terrorism, कि उसको हमें रोकना है, हमें और हमें जो है FATF की रेगुलेशंस को देखना है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स गाइडलाइंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग फाइनेंस टेररिज्म, CFT, तो इसके साथ हमें लेके चलना है। इसके बगैर हम फंड्स रिसीव नहीं कर सकते, हम किसी भी अननोन सोर्स से यानी कि फंड नहीं रिसीव कर सकते।
Registration of the FSBA, authorized dealer will register the finance FCY loan, accept overdraft facilities under this part after ensuring that the terms and the conditions of the underlying loans and loan agreements comply with the relevant regulations of the category against which the loan is being registered. The responsibility of the authorized dealer, conditions, precedent, and the list of the minimum required documents to register the loans has been laid down in the part F. मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो उसमें मैंने पहले भी कहा, रिमाइंड करा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारे पार्ट एफ में है। प्रीपेमेंट, the request of the prepayment of FSBA will be evaluated by the State Bank of Pakistan on a case to case basis। तो हम उसको प्रीपेमेंट्स को evaluate करेंगे। Credit lines overdraft established by the authorized dealers with the correspondent bank and overseas branches। Authorized dealers may obtain short-term loans and the credit lines from their overseas branches and correspondents to meet the liquidity shortages in the domestic foreign exchange market and to meet with the nostro funding requirements। Maximum maturity of the such loans and the credit lines is 7 days। तो हम यहाँ पर अपने फाइनेंसिंग के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को मीट करने के लिए हम हमारे पास जो बैंक की ब्रांचेस हैं वो अपने उस पर फंड्स मंगवा सकते हैं। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो दो अकाउंट है हमारे पास होते हैं। व्हेन वी हैव अ नॉस्ट्रो अकाउंट, दिस मींस हम अपना अकाउंट रखेंगे और उनका अकाउंट हमारे पास आएगा, वो वॉस्ट्रो कहलाता है। तो फॉरेन करेंसी के जो अकाउंट्स बाहर हम मेंटेन करते हैं वो हमारे लिए नॉस्ट्रो अकाउंट्स हो जाते हैं। राइट, नॉस्ट्रो इज अ लोकल टू द फॉरेन, यानी हमारे बैंक का या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बाहर अकाउंट। जब बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हमारे पास अकाउंट होगा तो वो वॉस्ट्रो कहलाएगा। तो जो फंड्स हम लेते हैं और उसको पे करते हैं तो इस मैकेनिज्म को थ्रू जाता है ये। बॉरोइंग सीलिंग हमारे पास जो है वो 100 बेसिस पॉइंट मींस 1%। इसके ऊपर जो बॉरोइंग सीलिंग है वो 1% का मार्कअप अलाउड है। अदर टर्म्स एंड कंडीशन इफ सच लोन और ओवरड्राफ्ट आर रिक्वायर्ड टू बी सिक्योर्ड बाय द कोलैटरल टू बी लॉन्च्ड विद द पाकिस्तान और एल्सवेयर, full details of the proposed arrangement shall be furnished to the Exchange Policy Department of the State Bank of Pakistan prior approval for prior approval। कोई कोलेटरल अगर इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उस कोलेटरल का जाहिर है वो कोलेटरल पॉसिबिलिटी पाकिस्तान से बाहर हो सकता है क्योंकि हम फॉरेन करेंसी लोन की बात कर रहे हैं। तो उसका भी स्टेट बैंक को उसकी इंफॉर्मेशन और उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स एंड द क्रेडिट लाइंस अवेलेबल अंडर दिस पैरा may be remitted by the authorized dealer without the prior approval of the State Bank of Pakistan। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म लोन जो है जब लोन रजिस्टर हो गया तो उसके बाद हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट लाइन अवेल अंडर दिस पैरा may be remitted by the authorized dealer without prior approval। FSBA by the authorized dealers, banks and the branches of subsidiaries of the foreign banks in Pakistan for the liquidity management purposes। अब क्या है हमारे पास देखिए कि एफएसबीए जो है फॉरेन एडजस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक और ब्रांचेस या सब्सिडीज ऑफ द फॉरेन बैंक इन पाकिस्तान फॉर द लिक्विडिटी पर्पसेस। द पर्पस ऑफ द एफएसबीए by the authorized dealers and the bank branches of the subsidiaries and the foreign banks shall be for the liquidity management, and the majority of the FSBA under this category shall be for the 1 month to 1 year। अगर हमने अपने लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कोई पैसे मंगवाए बाहर से, जैसे डॉलर के हमारे पास इसमें अभी अपने ऊपर जिक्र किया, डॉलर को कोई शॉर्टफॉल है मार्केट के अंदर, हमें उनको डॉलर पेमेंट्स करनी है तो उसके लिए अगर पैसे मंगवाए गए हैं तो वो पैसे वो फैसिलिटी की जो टेन्योर है उसका 1 मंथ टू 1 ईयर है। बॉरोइंग सीलिंग इसके लिए जो है हमारे पास ये बताओ ऑथराइज्ड डीलर्स। देखिए ये 3 पार्ट पे हम चले गए, 2 पे हम देख ले पहले ऊपर आके 2 पे हमारी क्रेडिट लाइन की बात हुई थी, यहाँ से हमने बात की थी। अब पार्ट 1 एलिजिबिलिटी जो कॉमन स्ट्रक्चर लेता है, ये बोरोड की एलिजिबिलिटी लेता है, लेंडर की एलिजिबिलिटी लेता है, रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया और प्रीपेमेंट वगैरह की बात की। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हमने क्रेडिट लाइंस ओवरड्राफ्ट्स को हमने बात कर ली। अब पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 में एफएसबीए बाय द ऑथराइज्ड डीलर्स डीलर बैंक्स and the branches and subsidiaries of the foreign banks in Pakistan for liquidity management, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी क्रेडिट सीलिंग क्या है? 3.5% and 350 basis point threshold। Under this category, FSBA, the eligible borrower can borrow foreign currency up to the 100% of the unimpaired capital। जो उसका कैपिटल मौजूद है उस कैपिटल के साथ वो 100% borrowing कर सकता है from an eligible lender as per the latest audited financial statements। In other terms, the authorized dealer or the bank and the branches of the foreign banks in Pakistan
are not allowed to offer any security or the collateral guarantee whatsoever to the lender under FSBA as the borrowing will be clean and based on the balance sheet strength. क्योंकि वो बैलेंस शीट की बेसिस पे की जा रही है, क्लीन फंडिंग होनी चाहिए, तो लिहाजा हम उसके लिए कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं कर सकते. व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, वी आर टॉकिंग ऑफ एफएसबीए बाय द ऑथराइज्ड डीलर्स, banks and the branches, subsidiaries of the foreign banks in Pakistan for liquidity management. Liquidity management के लिए पैसे आ रहे हैं, और उसमें की सब्सिडीज ऑफ द फॉरेन बैंक्स है और ये लोग मंगवा रहे हैं, तो इनके लिए हमारा ये है कि ये क्लीन लैंडिंग होगी, इसके लिए कोलेटरल नहीं होंगे. लॉन्ग टर्म एफएसबीए फोर्थ पार्ट पे हम आ गए. By the dealers in the case of the eligible borrower under this category intends to borrow funds from the abroad for a long period of longer period than 1 year for a purpose other than liquidity management. देखिए, एक तो पीरियड बढ़ गया और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का पर्पस खत्म हो गया. The authorities there shall submit the request to the Director, Exchange Policy Department of State Bank of Pakistan, Karachi. Such request shall be considered by the State Bank of Pakistan on merit and case-to-case basis. In special cases basis पे जाएंगे यहाँ पर. FSBA by the microfinance bank institutions. The purpose of the FSBA by the microfinance bank or the institution should be financing of their loan portfolio only. The minimum maturity 2 years. तो अब तक जो लोन पोर्टफोलियो दे रहे हैं कि वो हम ये कह रहे हैं वो बाहर से पैसे मंगवा रहे हैं. अब देखिए, इसके अंदर जो मिडिल ईस्ट के बैंक हमारे पास ऑपरेट कर रहे हैं, वो माइक्रो फाइनेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो फंडिंग कर रहे हैं, वहां से उनकी सोर्सेज से फंडिंग आ रही है और वो फंडिंग पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस के अंदर इस्तेमाल की जा रही है. द कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग लाइबोर प्लस 5%. ये देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई परसेंट आपको नजर आ रहा है. तो क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक की जो लैंडिंग रेट है वो बहुत हाई है, तो उनको जो फंड्स मिल रहे हैं वो भी लाइबोर प्लस 5% पे जा रहे हैं. अदर टर्म्स एंड कंडीशन, the disbursed FCY funds will immediately converted into PKR. ये PKR में converted and credited to the borrowing microfinance banks or institutions account maintained with the concerned authorized dealer in Pakistan. Under no circumstances, microfinance banks or the institution will be allowed to retain such funds in the foreign currency. अब देखिए, उनके साथ दूसरा यहाँ से कि लाइबोर प्लस 5% पे आप चले गए और आप कह रहे हैं फंड्स फॉरेन कन्वर्ट हो जाएंगे. जब फंड्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर दे आर एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ द एक्सचेंज लॉस, क्योंकि हमारी करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से वहाँ पे एक्सचेंज लॉस के जो भी एलिमेंट होगा वो एक्सपोज है. इसीलिए जो मैंने आपको अभी कहा कि माइक्रो फाइनेंस बैंक के जो रेट ऑफ लेंडिंग है वो बहुत ज्यादा होते हैं. ऑथराइज्ड डीलर में प्रोवाइड फॉरवर्ड कवर फैसिलिटी ऑन द फॉरेन करेंसी लोन्स टू द माइक्रो फाइनेंस बैंक विद द प्रिवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस जो है वो उनको फॉरवर्ड कवर प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉरवर्ड कवर हमने लास्ट उसमें डिस्कशन में किया था, तो मैक्सिमम पीरियड बन गया था, फिर रोल ओवर था, तो यहाँ पे उनके साथ जो है एक्सपोजर मौजूद है. फिर हम कह रहे हैं FSBA by other financial institution, that is a DFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीजिंग कंपनीज इसमें आ जाती हैं, DFIs है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, देखिए PSOs, PSPs एंड लीजिंग कंपनीज, जब मैंने मेंशन किया आपको, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी, ये तमाम लोगों को हमने यहाँ बता दिया कि in case other financial institutions not covered, such as the non-banking financial institution working in Pakistan, deem it necessary to borrow from abroad, अगर उनको बाहर से borrow करना है, इसमें देखिए borrowing वही लोग बाहर से करेंगे जिनकी रूट्स बाहर है, right? They will approach to the Director Exchange Policy Department, clearly specify the purpose of the borrowing along with all supporting documents. वहां से उन्होंने लेना है अप्रूवल एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट से. State Bank of Pakistan will consider the request on its merit on case to case basis बात होगी. तो ये हमारी पार्ट डी था, इसको एक दफा देख ले कि पार्ट डी के अंदर हमने कंप्लीटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर रहे हैं तो किस तरह बोरो कर सकते हैं, एलिजिबल बोरोर्स कौन है, तो एलिजिबल बोरोर्स से सब कंप्लीट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे सामने निकल के आया. लेंडर्स जो है, लेंडर के साथ हमारी बात हुई, तो उसमें भी फाइनेंशियल लोग ये है कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डोनर एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक से ये लोग कर सकते हैं. फिर उसका रजिस्ट्रेशन की बात हुई, उसके साथ जो आगे हम केस टू केस गए तो उसके साथ बोरोइंग कॉस्ट पर्पस और उसके साथ उसका अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी हमारी इसमें डिस्कशन मैंने आपके साथ की. इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट ई है. पार्ट ई डील्स विद द गारंटीज. देखिए, जब गारंटीज की हम बात करते हैं तो यही इसी के साथ ये एलसीज के लेटर ऑफ क्रेडिट पे भी आ जाएगा, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट पे भी आ जाएगा और इसके साथ चलेगा ये. तो गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट, देखिए गारंटीज के लिए हमारे पास क्या, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18(2) ऑफ द एक्ट, द गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर
will be governed under the Prudential Regulation R7. Their guarantees in addition to the specific clause given below. जो specific clause guarantees है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं उसमें. Guarantees on behalf of the resident of the Pakistan in favor of the non-resident. अब हमारे पाकिस्तान resident of Pakistan in favor of the non-resident. जैसे हमने कहा था कि हम कोई एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो फैसल चीजें हैं, तो उसके अंदर जो गारंटीज बीच में आएंगी उनको आपके साथ लिखा है. Except in the case covered in paragraph 14, prior approval is required for giving any guarantee or the undertaking or the opening a letter of credit, standby letter of credit. कोई भी चीज अगर हम यहाँ ओपन कर रहे हैं उसको क्लियर करें. देखिए एलसी यहाँ एक क्लियर कर लीजिए कि एलसी और स्टैंडबाई लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या फर्क है. एलसी इज द पेमेंट बाय द बैंक और द प्रेजेंट डॉक्यूमेंट. एलसी में जब कोई हमारे इंपोर्ट की है और अगर जो सेलर है वो अपने डॉक्यूमेंट जो उसके क्राइटेरिया है उसकी बेसिस के ऊपर बैंक को प्रेजेंट कर देगा और ड्यू डेट तो उसको पेमेंट हो जाएगी. व्हाइल एसबीएलसी एक्टिवेट्स अपॉन द फेलियर ऑफ द बायर. जब एसबी स्टैंड बाय एलसी कहते हैं तो स्टैंड बाय एलसी उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. जब फेलियर ऑफ द बायर होगा तो फिर उसके ऊपर एसबीएलसी आ जाएगी. लेकिन आईएमएफ के साथ हमारा क्या आ रहा है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट आ रहा है कि अगर हम फेल होते तो फिर वो अरेंजमेंट किस तरीके से जो भी हमने कोलैटरल जो हमारे पीछे गारंटीज हैं फिर वो इनकैशमेंट पे चली जाती है आपके. ओके. द स्टैंड बाय द इश्यूएंस और द ओपनिंग ऑफ व्हिच मे इन्वॉल्व पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट ईदर इन द फॉरेन करेंसी और द रुपी. Application seeking permission for giving the guarantees related to the FCY borrowings from the abroad, except or as may otherwise be allowed by the State Bank of Pakistan or the equity investment abroad, will be forwarded to the Direct Exchange Policy. उनके पास इसकी अप्रूवल आएगी State Bank of Pakistan. Well, all other cases relating to the guarantee will be forwarded to the Director Foreign Exchange Operation Department. ये स्टेट बैंक की अपनी जो स्ट्रक्चरिंग है ऑर्गेनाइज में उसके तहत अगर इफ वी आर सेइंग कि व्हाट इज द डिफरेंस एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन फॉर गिविंग गारंटीज टू द एफसीवाई बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड और द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड जो होगी वो हमारे पास कहां से आएगी, वो एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट से आएगी. व्हाइल वी आर सेइंग while other cases the guarantee will be forwarded to Director Foreign Exchange Operations, State Bank of Pakistan, Banking Services Corporation. These applications will be made by the letter giving full particulars of the guarantee SPLC or undertaking, the amount and the period and the purpose of the guarantee and the terms and the payments or in the event of the guarantee being invoked. अगर कैश होगी तो उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है, किस वक्त क्या रिकॉल हो सकती है या क्या कैश की जा सकती है. These restrictions also apply to the renewal of the such guarantees undertakings letter of credit and standby letter of credit. उसके renewal होंगे तो उसपे भी यही कंडीशन अप्लाई होगी. यानी जब इशू हो रही है तो वो वही फिर हमारे पास उसके renewal के ऊपर भी आ जाएगी. ओके. Then what we are discussing next point, देखिए इसमें हमारे पास जो है these restrictions also apply for the renewal of the such letter of credits. ये हमने बात करी. Such applications for the renewal may be forwarded by the authorized dealers to the Director Exchange Policy Department, State Bank of Pakistan और Director Foreign Exchange Operations, State Bank of Pakistan. तो जो authorized dealer है वो जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है ना ऊपर से डिस्कस क्या हमने तो उनको फॉरवर्ड कर देगा. if the period involved is less than 12, right? तो हमने क्या कहा, stating the extent to which the facilities he covered by the guarantee were utilized during the previous 12 months or during a validity of the guarantee, etc. If the period involved is less than 12 months, तो उस पीरियड के साथ उसके रिन्यूअल के लिए हम एप्लीकेशन कर देंगे, अप्लाई कर देंगे. In case the guarantee is invoked, the particular of the case should be reported by the concerned authorized dealer to the State Bank of Pakistan के दिन में. अगर गारंटी को इन्वोक हो गई है, दी गई थी और उसके ऊपर कोई मसला कोई कैशमेंट पे चली गई है तो उसकी रिपोर्टिंग विद इन अ वीक करनी है टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए. However, restrictions imposed above shall not apply to the establishment of the letter of credit or the similar undertaking by the authorized dealer to finance imports into Pakistan in accordance with the provisions of Chapter 13. अगर Chapter 13 के तहत कोई imports आ रही है, उसमें कोई चीजें हो रही है तो वो उसकी रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है. Guarantees on behalf of the non-resident in favor of the resident. अब हम किसको दे रहे हैं, on behalf of non-resident दे रहे हैं टू residents. क्या हम ये कह रहे हैं कि हम अगर बाहर काम कर रहे थे तो हमें अगर हमारे पैसे नहीं आएंगे, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पैसे नहीं आएंगे तो फिर वो कैसे कवर होगा. क्योंकि ये वाली बात होती है कि हमने इम्पोर्ट किया और हमने पैसे नहीं दिए तो वो तो नॉन रेजिडेंट कवर हो गया. अब हम कह रहे हैं हमने नॉन रेजिडेंट को गुड सप्लाई की है, हमने एक्सपोर्ट किया है, हमारे पैसे नहीं है
उसमें देखिए बाहर के बैंक को तो एक और कंपल्सन प्रोसेस होगा, तो हम ये कहते हैं कि आप हमारे बैंक से हमें गारंटी इशू करा दें, हमें एलसी इशू करा दें। तो उसमें जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक की बात होती है, इसलिए होती है कि अगर बार्कलेस बैंक है तो बार्कलेस बैंक अब पाकिस्तान में नहीं है, तो बार्कलेस बैंक पाकिस्तान में कोई गारंटी कैसे देगा? तो बार्कलेस बैंक के जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड, that is Mizan Bank, that is Muslim Commercial MCB, Muslim Commercial Bank, तो वो और बिहार द बार्कलेस बैंक हमें गारंटी इशू कर देंगे और बाद में इंटर्न जाकर बार्कलेस से उसको रिकॉल करेंगे। Prior approval is required for giving the guarantees undertaking in favor of the residents of Pakistanis on behalf of the non-resident against the overseas guarantees they have raised or co-returned launched outside Pakistan. This restriction does not, however, apply to the cases covered under the para 14 and 15, where the guarantee is being extended by the authorized dealers on the basis of back-to-back dealing. जो मैंने कहा ना कि जी अगर ये बाहर से तो बैक टू बैक गारंटी कि बार्कले जो है वो मुस्लिम कमर्शियल को गारंटी दे रहा है, मुस्लिम कमर्शियल हमें गारंटी दे रहा है, तो ये बैक टू बैक गारंटी का केस हो जाता है। Now back to back guarantee from its overseas branch or the correspondent की बात आ रही। Application for this purpose should be made by the authorized dealer to the Director of Foreign Exchange Operation Department, जो Department of Foreign Exchange उसको करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सर्विस कॉर्पोरेशन को, गिविंग फुल पर्टिकुलर एंड डिटेल, right? Authorized dealers will be reimbursed in the case even if the guarantee is being implemented, and renewal of such guarantee also requires prior permission of the State Bank of Pakistan। बड़ी क्लियर बात है कि अगर उसकी रिन्यूअल है तो वो होगी, और गारंटी पीछे जो मैंने बात की अगर कैश हुई तो उसको उनको रीइंबर्स किया जाएगा। Authorized dealer should state the extent to which the facilities covered by the guarantee or the undertaking have been utilized during 12 months or such shorter period for which the facility remains available। तो जो भी अगर यूटिलाइजेशन हुआ है गारंटी का, अगर कोई चीज तो वो रिपोर्ट करना है, और जो बैलेंस रह गया वो बैलेंस बताना है कि क्या बैलेंस हमारे पास बाकी है उसका। ओके, देन वी हैव परफॉर्मेंस क्या और द बिड बॉन्ड। अब हमारे परफॉर्मेंस गारंटी, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है उसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो परफॉर्मेंस गारंटी होती है कि इफ समबडी इज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, तो what compensation the person is going to get, because they might pay the advance, they might suffer losses, तो उसका किस तरीके से होगा। Authorized dealers and their insurance companies, which are being regulated by the Security Exchange Commission of Pakistan for the above purpose, may issue performance of the bid guarantee on behalf of the exporters, exporter के behalf, क्योंकि एक्सपोर्टर को ऑर्डर दिया, एक्सपोर्टर ने उस पर एडवांस ले लिया, और एक्सपोर्टर अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं मीट कर सका तो फिर क्या होगा। देखिए, मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड कंसल्टेंसी और द कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन एंड द कंपनी, यही कंस्ट्रक्शन का आ गया कॉन्ट्रैक्ट है, तो approved by the Pakistan Engineering Council in Pakistan subject to the following condition। अब उसकी कंडीशंस क्या है हमारी? टेंडर स्पेसिफिकली कॉल फॉर द फर्निशिंग ऑफ सच गारंटी। टेंडर की रिक्वायरमेंट थी कि आप गारंटी सबमिट करेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर कोई एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे थे, जिसके लिए हमने कहा कि ये हमारे पास, या पाकिस्तान में हमारे पास आगे कोई एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास बात हो रही है, तो कहीं भी अगर वो एडवांस से चीज इंवॉल्व, तो उसके लिए हमने गारंटी कर दी है। द बेनिफिशियरी अब्रॉड इज अ फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इज अ प्राइवेट कंपनी और फॉर्म, जो इंवॉल्व है वो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो द टेंडर इज सीपैक है, सीपैक को कंसीडर कर लीजिए, उसमें बहुत सारे सप्लायर और लोग हैं। द टेंडर is bona fide exporter or the manufacturer of the commodity which is specified in the tender that is there is no restriction or is export from Pakistan। अब हमने जो बना के चीजें भेजी, शिपयार्ड है, शिपयार्ड ने शिप का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो शिप हमारे पास से बन के एक्सपोर्ट होगा। जब उस शिप के लिए एक ऑर्डर प्लेस हुआ, मे बी फ्रॉम द नाइजीरिया, मे बी फ्रॉम टर्की और एनीथिंग एल्स, तो वो ऑर्डर जो प्लेस हुआ, तो उसके जो पैसे एडवांसेस आए थे, उसके लिए हमने गारंटी की कि हम शिप बना के दे देंगे आपको। ओके, in case the consultancy of the construction firm and engineering firms recognized by the Pakistan Engineering Council, the recognition issuing the performance of the bid bond must be satisfied if that the temporer is a bona fide consultancy or engineering firm having the requisite financial and technical resources, and there are reasonable prospects of their being able to successfully execute the contract, companies with a poor track record will not be eligible। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई क्रेडिट रेटिंग का नहीं आ रहा, कि यहाँ पे पैसों का नहीं है, यहाँ एक परफॉर्मेंस की बात है। तो अगर उनका कोई प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जहाँ पे उनके अगेंस्ट सीधे कॉल हुई है, तो फिर उनकी पूरा परफॉर्मेंस कहलाएगी। Remittance under the guarantee or the performance bond and their reporting to the State Bank of Pakistan
Now, authorized dealers may effect remittance against the performance guarantee or the bond issued by them by the Pakistani Insurance Corporation, National Insurance Corporation, or other insurance companies. Performance bond issue होता है insurance company issue कर रही है, which are being regulated by the Security Exchange Commission of Pakistan. If the remittance becomes necessary for the implementation of such performance bond or the guarantee of the bond, in those cases, authorized dealer would minutely scrutinize the term of the para 12 and satisfy themselves that the amount has become payable and to the beneficiary due to the default. अब देखिए ये important point है, the amount has become payable due to the default of the party in Pakistan. इसको पैसे भेजने से पहले we have to make and ensure that this has taken place and it has happened. तो ये किसका काम है? Authorized dealer का काम है. While reporting the remittance made against the performance bond, guarantee and bond to the concerned area of the Office of the Foreign Exchange Operation Department, State Bank of Pakistan, in their monthly foreign exchange return, the authorized dealer will punch the Form M with the documents giving flow or with the recovering statement in duplicate as per the appendix V94. जो उनकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली वो फॉर्म्स वगैरह चीजें सबमिट करेंगे हम. ओके, तो कॉपी ऑफ द गारंटी है, कॉपी ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस है, तमाम चीजें हैं. देन वी आर टॉकिंग ऑफ guarantees which may be given without prior approval of the State Bank of Pakistan. अब देखिए बगैर स्टेट बैंक की अप्रूवल के हम गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर. तो हमने कहा कि the restriction in the paragraph 1011 do not apply to the guarantees given by the authorized dealers in favor of the non-resident on behalf of their customers in the ordinary course of their business in respect of missing documents, authentication of the signature, release of the goods or the trust receipts, deficit in the document negotiated by them under the letter of credit. The guarantees may be given दी जा सकती without prior approval and the restriction of the para नहीं apply होगी क्योंकि what we are seeing in the normally course of business में. Okay, the guarantees and the collateral in favor of the overseas banks, the branches and the correspondents, authorized dealers shall not without prior approval. देखिए वहाँ तो without prior approval था, shall not without prior approval of the State Bank of Pakistan furnish the guarantee to the overseas bank branches or the correspondents or hold collateral on their behalf in respect of any credit facility, guarantees in the letter may be given, the guarantee letter may be given or for any other purpose. All applications for this purpose should be made to the Director Exchange Policy Department. Okay, उनको किया जाएगा by the letter giving full details and the particulars required. वो तमाम details हम देंगे. Then we have the guarantee in favor of the government departments. Government department की favor में नहीं, ministries and public sector, public यानी PSO वगैरह, PIA PSO हो गए. Authorized dealers may issue foreign currency guarantee on behalf of the residents, and the non-residents in favor of the government departments, right? तो जो अगर सप्लाई कर रहे हैं तो फेवर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनसे कह रहे हैं कि आप हमें गारंटी, क्योंकि आपने कोई मुआवजा के लिए सबमिशन करनी है और काम करना, तो वहां पे वो गारंटीज दीजिए. तो वो गारंटीज आएंगी सब्जेक्ट टू द कंप्लायंसेस ऑफ द प्रूडेंशियल रेगुलेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ द स्टेट बैंक. Renewal of the loans and the overdraft. In case where the extension or the issuance of the loan or the overdraft, the guarantees require prior approval of the State Bank of Pakistan or the Banking Service Corporation. The new renewal of the such loan overdraft, the guarantee shall also require the approval. हमने पिछले कई दफा डिस्कस किया कि जब इनिशियल चीज इशू करने के लिए अप्रूवल चाहिए, जब उसकी रेन्यूअल होगी तो फिर हमें डेफिनेटली उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए. अब यहाँ से देखिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी फैसिलिटीज अब तक हमने पढ़ी है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट एफ हमारे पास है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द लोन रजिस्ट्रेशन. जो हमारे वो जितने हमने पढ़े हैं वो सारे लोन्स यहाँ रेफर हो जाएंगे आगे. इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन होगी, तो बाद में मैं इसको थोड़ा स्किप करता हूँ चलूंगा क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल टाइप की चीज बन जाएगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथराइज्ड डीलर, प्रोसीजर टू रजिस्टर लोन के लिए अथॉरिटी डीलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Authorized dealer क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Shall maintain a centralized loan database of the outstanding foreign currency loan. Authorized dealer will ensure compliance and know your customer, anti-money laundering, combating finance for terrorism guidelines जो होंगी वो फॉलो करनी. It will be the responsibility of the authorized dealer to maintain the record of the beneficial owner, directors of the borrower. एक और लोग हैं वो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सस्पिशियस कैरेक्टर्स हैं
तो ये इशू तो नहीं आ रहा. Authorized dealer is responsible to register the loan before the executing any transaction with for their client. तो उसका पहले registration होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ. Authorized dealers are allowed to effect all the loans related remittances such as the principal, interest, other fees, and the prepayment schedules from the registering after registering the loan, except PSBA for the project financing and FTFA for import loans. However, इनके अलावा authorities are allowed to effect all the loans related remittances. तो सबको उनको लेके चलना है. However, the remittances, the principal, interest, and other fees against the PSBA and for the project financing or FTFA for the import loans are allowed after the registration of the repayment schedule with the State Bank of Pakistan. तो वो थोड़ा उन्होंने रिलैक्स कर दिया उसको. While registering the loan, authorized dealer will ensure that the underlying loan agreement is compliant with all the terms and the conditions mentioned in the relevant category. जिस कैटेगरी का लोन है, तो अभी हमने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की बात की, वर्किंग कैपिटल अगर है, जिस टाइप का जो लोन है तो उसके साथ हमें देखना होगा. Further, authorized dealer will maintain all the category-wise documents as mentioned below. The authorized dealer is ensured to have independent assessment of each foreign currency loan proposal, transaction for the money laundering, राइट, वो हमें देखना होगा. टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क देखना होगा. फॉरेन एक्सचेंज पर्सपेक्टिव बाय देयर कंप्लायंस और द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, ये तमाम चीजें हमें देखनी होगी प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द लोन एग्रीमेंट. फॉर दिस पर्पस ऑथराइज्ड डीलर शैल आल्सो कंडक्ट appropriate due diligence of the proposal including particular lenders and shall determine अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर. ये तो नहीं है कि पैसे मंगवाए एक ही ले जा रहे हो, इस्तेमाल भी करेंगे उसको, तो कौन उसको कर रहा है, किस तरीके से होगा, वो तमाम चीजें उनको इंश्योर करना है. अब यहाँ एक के बाद एक हम चलेंगे लेकर के, लेकिन जाहिर से जैसे मैंने कहा मैं कुछ चीजों को स्किप भी करता जाऊंगा, लेकिन इसको जो प्रॉपर एक हमारा जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क है उसको हम बात कर लेंगे. PSBA for the project financing document requirement, original loan agreement, a list of the company's directors, national NIC, the numbers, beneficial ownership, project report, location of the project, and a copy of the certificate of incorporation in case of the buyer credit management, foreign supplier authentication. For the intercompany loans, documentary evidence of the relationship between the two companies. को intercompany loan आ रहा है, हम कह रहे बाहर से, तो हम कह रहे holding company sending loan to the subsidiary or the associate in Pakistan, तो वो हम उसको देखेंगे आके. Export and documentary evidence and the data of the last year's export. Other conditions in the case of the supplier credit, buyer credit arrangement, the foreign supplier, the remittance of the down payments will be made by the authorized dealer to the extent provided in the agreement. जहां तक agreement में जो चीजें मौजूद हैं उनकी clauses खत्म काम करेंगे. The interim payment जो होंगी बीच में, जो अगर पहले हमारे पास advance payment है, फिर interim payment आ रही है, during the gap between the loan registration and the repayment schedule, authorized dealer will approach the exchange policy department of the State Bank for permission to remit the principal and the repayment and the interest and the payment. अगर कोई पेमेंट बीच में आ रही है और रजिस्ट्रेशन में टाइम लगना, बाद में और टाइम लग जाता है. इसमें दो तीन चीजें होती है, एक तो स्टेट बैंक की कंप्लायंसेस में डिटेल है और दूसरी हमारी डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्ट हो गई है, तो उसकी वजह से हमारे पास लोन रजिस्ट्रेशन रुक जाता है. However, for all the loan related fees expenses, dealer will approach foreign exchange operation department as State Bank of Pakistan for the corporation for obtaining prior permission. The authorized dealer will furnish with the following documents. In case of the disbursement, authorized dealer shall submit proceed realization PRC, proceed realization certificate. जो लोग हमारे पास आते हैं, क्लाइंट्स हमारे पास होते हैं, वो हमें कहते हैं कि जी जैसे सिंपल मैं शुरू में डिस्कस किया था कि हमारी फैमिली के लिए हमारे बच्चे पैसे भेज रहे हैं या हमारी फैमिली पैसे भेज रही है, तो या हमारे पास हस्बैंड बाहर है, यहाँ पे वो बच्चे वाइफ फैमिली के लिए पैसे भेज रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने PRC फाइल में रखिए. जैसे कभी भी आपसे कोई चीज क्वेश्चन की गई तो आप प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट दिखा देंगे. और जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जब फैमिली के लिए कोई पैसे भेजते हैं तो वो होम रेमिटेंस के तौर पे आते हैं, तो उसकी हम उसका रख लेते हैं. लेकिन जहाँ पे हमें रियल एस्टेट खरीदना है या कोई चीज खरीदनी, तो रेमिटेंस के अंदर हमारा पर्पस लिखा होता है, तो हम उसको वो डॉक्यूमेंट अपने पास क्लाइंट के पास फाइल मेंटेन करवा देते हैं. इन केस ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, देखिए ऑथराइज्ड डीलर शैल सबमिट एक्सचेंज entitlement certificate issued by the foreign exchange operation department. In case of the import services, the authorized dealer shall submit external auditor certificate confirming that the amount of the
PSBA utilized for the subject payment, although the original agreement and the invoices, along with the original agreement and invoices. देखिए, जहां पर प्लांट आया तो वो तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिजिकल है, टेंजिबल है. यहाँ पर सर्विसेज है तो वहां तो उसके पीछे वो तो इंटेंजिबल में चली गई, इसलिए हमने ऑडिटर सर्टिफिकेट लगा दिया यहाँ पे, राइट. Was the liability to the foreign loan is established through the aforementioned documents. The repayment schedule as per Form B87 will be submitted to the Exchange Policy Department of the State Bank of Pakistan in quadruplicate in 4 copies होंगी through the authorized dealer. Further the aforementioned repayment schedule shall be submitted. ठीक है, 1 month of the completion of the loan disbursement project उसके अंदर में कर देना होगा ये. After the authorized dealer will affect the remittance of the principal and the interest and other fees shall maintain a copy of the repayment schedule, a certificate confirming that applicable benchmark rate, जो rates हम मुस्तकिल डिस्कस करते रहे मुख्तलिफ फैसिलिटीज के लिए. यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि बेसिस पॉइंट का जो था परसेंटेज के ऊपर वो हम देखेंगे. a certificate confirming the payment and the copy of the schedule and applicable taxes, while form M indicating LRN, तो उसके ऊपर हमारा लोन रजिस्ट्रेशन नंबर और चीजें भी वहां आ जाएगी. PSBA फॉर द वर्किंग कैपिटल हुआ या ब्रिज फाइनेंसिंग हुआ तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा. लिस्ट ऑफ द कंपनी डायरेक्टर आ गया, वही पुराना वाली बात हो गई. बेनिफिशियल ओनरशिप आ गई, ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट आ गई. अदर कंडीशन में कंप्लीट डिसबर्समेंट और द फॉरेन करेंसी लोन एज पर द अंडरलाइंग लोन एग्रीमेंट हो गया. ऑथराइज्ड डीलर कैन अफेक्ट द रेमिटेंस ऑफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड अदर फीस. The loan is registered. A copy of the realization certificate, a certificate confirming applicable benchmark rate, ये तमाम चीजें वही पुरानी वाली हमारी रिपीट होगी यहाँ पे. ठीक, जो मैं आपसे कहा था कि बहुत सारे आएंगे तो मैं उसको उस तरीके से मैं टेकअप कर लूंगा. और इसका PSBA फॉर सेक्यूरिटाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड एंड फाइनेंसिंग, इसके अंदर भी देखिए मोर और लेस उसी टाइप की चीजें हमारी यहाँ रिपीट हो रही हैं चीजों में. बोरोइंग फ्रॉम द अब्रॉड FSBA अगर हमारे पास है तो उसमें देखिए ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट है, कॉपी ऑफ द फाइनल expected repayment schedule हो गया. अदर कंडीशन में authorized dealer will report transaction in 93 till maturity of the loans, and after the registration of the non-authorized dealer can remit the principal and the repayment of the repayment and the interest payment. Credit loan or the overdraft established by the authorized dealers with the correspondent or overseas branches. तो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन तो ओरिजिनल. लेकिन लोन एग्रीमेंट हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जब आता है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. लोन लॉन्ग टर्म FSBA टू बी रेज्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर, अगर ये इस कैटेगरी में हमें वही रिक्वेस्ट फॉर ड्यूली और साइन प्रेसिडेंट द CEO ऑफ द एप्लीकेंट इंस्टीट्यूशन पर्पस, उसका होगा डिटेल यूटिलाइजेशन होगा, तो प्रोसीड रिपेमेंट और ये तमाम चीजें होंगी. एक्सपोर्ट लोन्स है हमारे पास, उसमें भी देख लीजिए. रिक्वेस्ट लेटर हो गया, लिस्ट ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर्स हो गए, NIC हो गए, पासपोर्ट नंबर हो गया, बेनिफिशियल ओनरशिप, ये चीजें हो गई. अदर कंडीशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ द डिसबर्समेंट of the foreign currency loan in accordance with the underlying loan agreement, authorized dealer will keep the proceeds realization certificate in original, तो वो भी हमें सफिशिएंट होगी. हमारे पास कंपनी से मैं यहाँ पे पॉइंट को बता दूं क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने अभी 2 years के लिए आपसे डिस्कस किया. प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट हमारे पास बहुत केयरलेसली है. दिस इज माय एक्सपीरियंस थ्रू आउट. जब इनकी रेमिटेंस की बात होती है, जब रजिस्ट्रेशन की बात होती है, जब चीजों की बात होती है, उस वक्त के ऊपर प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट ढूंढे जा रहे होते हैं. लेकिन ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई वाउचर बना है, कोई चीज बनी है, उसके पीछे हम इसकी कॉपी लगाएं और इसकी एक फाइल सेपरेट मेंटेन करें. ये मैं आके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ. क्योंकि एग्जामिनेशन वाली बात तो नहीं है कि जी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, नहीं. जो प्रैक्टिकल हमारा तरीकाकार है, हमारे पास देखिए ये तमाम चीजें कंपनीज में जो लोग जिसको कहते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट करते हैं, वो लोग हैंडल करते हैं इसको. जो देखिए कंपनीज में हमारे पास जनरल लेजर और ट्रेजरी मैनेजमेंट दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास होगी है. जो ट्रेजरी मैनेजमेंट को देखते हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट को अलग करते हैं, वो लोग इन चीजों को हैंडल करते हैं और वो इन चीजों को देख रहे होते हैं. फिर गारंटीज अगर है तो ऑथराइज्ड डीलर्स लेटर कंटेनिंग फुल डिटेल्स, कमेंट्स एंड रिकमेंडेशन, एप्लीकेंट रिक्वेस्ट, अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर आ जाएगा. Then the format of the guarantee आएगी, copy of the agreement आएगा, copy of the purchase order, contract in respect, ये हमने अगर performance guarantee हम दे रहे हैं तो उसके इसलिए हमारे purchase order आ गया. Details of the claims received against the guarantee at the time of the request of the renewal of the guarantee. Any other document जो required हो.
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट जी, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो हम कई जगहों पे ये कैसे बताते रहे कि जी अगर पैसे आ रहे तो आपको बताना है, आप रीपेमेंट कर रहे हो तो बताना है, पांच जगह एग्जेक्शंस भी थी इनकी। ये का डिस्कशन जो आपके साथ चल रहा है ये हमारा पार्ट जी के ऊपर है। तो पार्ट जी में हमने कहा था, जैसे पहले बात की थी हमने, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हमारा फॉर रिपोर्टिंग फॉरेन एंड प्राइवेट लोन्स, FPL data on DAP, all authorized dealers will be required responsible to ensure that the loan registration number LRN is obtained from the statistics and the data warehouse department. जो लोन आएगा उसका हमें लोन का नंबर लेना है by the 5th of the following month by providing information along with the repayment schedule as per the formats given in V146। ये सारे मैनुअल हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैनुअल के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बात करें। Subject data will be reported on the FCY loan portal of the state loan portal of the statistics and the data warehouse department of the State Bank of Pakistan with the proper purpose code assigned को हमने पर्पस बताए थे कि हमने लोन जो है वो ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए लिया है, वर्किंग कैपिटल के लिए लिया है, हमने सप्लायर क्रेडिट के लिए लिया है, या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बोरोइंग है। जो भी इसकी चीजें हैं उसके हिसाब से उसके जो कोड नंबर्स डिफाइंड है वो कोड नंबर में मेंशन करते हैं। Authorized dealer will ensure the repayment or schedule of all the foreign currency loans are updated on the foreign currency loan portal at all times after obtaining the registration। जो भी repayment schedule है उसमें कोई अगर changes आ रही है तो उसको भी वो अपडेट करते रहेंगे। Subsequent amendments, if any, अगर कोई चीज की जाएगी under in the underlying loan agreement, under authorized dealer will ensure that any subsequent change or amendment in the terms and the conditions of the underlying loan agreement shall comply with the relevant regulations of the category against which the loan was registered। The authorized dealer will also maintain the record of all such changes। जो भी चेंज अमेंडमेंट है, ये कई जगह पे ये बात हमारे पास आई थी कि जब हमने मेन लोन लिया उसका रोल बाद कोई चीज हुआ, कोई चेंज आया तो उसका भी रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि जाहिर जब लोन रजिस्टर है इस बैंक के रिकॉर्ड के ऊपर उसको कम्प्लीटली अपडेटेड डॉक्यूमेंट के तौर पे रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर तो कराया, उसको अपडेट नहीं किया और वो पड़ा हुआ है, और जब स्टेट बैंक की वेबसाइट को हम देखते हैं तो वहाँ पे एक आउटडेटेड डॉक्यूमेंट मौजूद है। क्योंकि जब रीपेमेंट और रिपैट्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक का जो डिपार्टमेंट स्टाफ है वो वहीं से जाके डाटा को अप्रोच करेगा, और जब अप्रोच करेगा तो हमारी रिक्वेस्ट कुछ और होगी और वहाँ डाटा कुछ और होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसको हमें सही करना रखना पड़ेगा। रेगुलेटरी एक्शन ऑन अकाउंट ऑफ द नॉन कंप्लायंस, और कोई रेगुलेटरी एक्शन क्या होगा इन केस ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस and non-submission or the late submission of any above mentioned returns, reports, regulatory action shall be taken against the concerned authorized dealers under the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act 1947। कोई भी अगर होगा तो फिर पेनल्टीज उसके ऊपर जो है ऑथराइज डीलर जो है उसको पेनलाइज किया जाएगा कि जी आप, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्लाइंट है पीछे वो हट जाता है, ऑथराइज डीलर सामने आ जाता है, यानी बैंक सामने आ जाता है। ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इन चीजों को देखे कि वो चीजें जो है वो किस तरीके से हो रही है और क्या हो रही है। अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट आ रहा है तो फिर उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी और उसको देखना पड़ेगा। तो ये मेरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया। ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि ये दो वीडियोस आपके सामने होगा और इसको इन दोनों को मिलाकर आपका ये चैप्टर 19 कवर होगा। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपके साथ चैप्टर 20 जो सिक्योरिटीज को डील करता है उसको डिस्कस करूंगा, और वो हमारा सिलेबस का एक और पार्ट हमारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह।